Hello guys, welcome back to Disha Study. In this session, we will do 30 previous year questions from the Computer and IT subject which asked in the previous SSC examination under the General Awareness section, which are conducted from 2010 onwards to 2023. And this is the 26th part of this series, and the link of this series playlist you will find in the description box. So let us start with the question. First question is, in the MS Excel 2010, we can collapse the ribbon to get extra space on the screen. Right-click anywhere on the ribbon and then click Collapse the ribbon or press blank shortcut key. Your A option is Alt plus F1, B option is Control plus F2, C option is Control plus F1 and D option is Alt plus F2. So one method को यहाँ पर already mention किया हुआ है, that is right click anywhere on the ribbon and then click collapse the ribbon. और जो shortcut key इसके लिए use होती है वो होती है Control plus F1. Okay, so option C is the right answer. Next is, which of the following keyboard shortcut is used to rename the table in MS Excel 2010? Your A option is Alt plus R, B option is Control plus T plus R, C option is Alt plus T plus R shortcut key, and the last option is Control plus R. So the right answer is option D, that is Control plus R. Next is, choose the wrong option with respect of the MS Excel 2010. Your A option is Alt plus Enter shortcut key is used in MS Excel to start a new line of text or add spacing between lines or paragraphs of text in a worksheet cell. Your B option is, in MS Excel 2010, Home tab in ribbon bar contains the most frequently used commands such as copying and pasting and sorting and filtering, formatting, etc. C option is, in MS Excel 2010, Control plus F is used in finding text within a sheet. And D option is, in MS Excel 2010, we can save the file by using the function key F3. So the incorrect option is option D. Okay, so that is, in MS Excel we can save the file by using the F3 function key. बाकी जो remaining 3 हैं आप देख सकते हो, इनको important one है, so आपको सभी पता होनी चाहिए. Next is, what is the default alignment of numeric values that are entered into the cell of an MS Excel 2010 worksheet? A option is justify, B option is right, C option is center, D option is left. So the right answer is option B, that is right. Numeric value की जो default alignment होती है cell में वो right होती है और text की left side होती है. Okay. Next is, blank shortcut key is used in MS Excel 2010 to go to the View tab. Your A option is Alt plus W, B option is Alt plus A, C option is Alt plus N shortcut key, and D is Alt plus I. So the right answer is option A, that is Alt plus W. Next is, in MS Excel 2010, blank operation is used to arrange the data in particular order. A option is chart, B option is table, C option is filter, and D option is sort. The right answer is option D, that is sort operation. Next question is, which of the following option is correct about enabling edit mode in worksheets of MS Excel 2010 and above? Your A option is click File, then go to Option, then go to Trust Center and select the Allow Editing आएगा यहाँ पर Editing Directly in Cells checkbox. B option is click File, then Options, then Customize Ribbon and select the Allow Editing Directly in Cell checkbox. C option is click File, then Options, then go to Advanced and under Editing options select the Allow Editing Directly in Cell checkbox. And D is click Files, then Options, then Customize Ribbon and under Editing options select the Allow Editing Directly in Cell checkbox. So right answer is option C, that is click File, then go to Option, then go to Advanced and under Editing options select the Allow Editing Directly in Cells checkbox. Next question is, what is the maximum number of characters that can be typed in a cell of MS Excel 2010 worksheet? A option is 256, B option is 16,384, C option is 1,024, and D option is 32,767. So the right answer is option D, that is 32,767. Next question is, blank shortcut key is used in MS Excel 2010 to select a row. Your A option is Alt plus Enter, B option is Control plus Enter, C option is Shift plus Spacebar, and D option is Control plus Spacebar. So the right answer is option C, that is Shift plus Spacebar.
Next question is in MS Excel 2010, which shortcut key is used to bold the selected text? A option is Control plus B option is Shift plus B, C option is Shift plus O, and last option is Control plus O. So the right answer is option A, that is Control plus B. Next is blank function key is used in MS Excel 2010 for rounding the number down. Your A option is if, B option is countif, C option is floor, D option is ceiling function. Now try to guess the right answer क्योंकि हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं इन दो फंक्शंस के ऊपर. Okay, so the right answer is option C, that is floor function. Next question is which of the following is not a function in MS Excel 2010? A option is max, B is sum, C option is average and D option is AVJ function. इसका मतलब भी एवरेज रहता है. So the right answer is the option D, that is average. एवरेज फंक्शन को इस तरह से जो है लिखा जाता है एक्सेल में, नॉट जहाँ जैसा कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है. सो ये बहुत कंफ्यूज करता है, सो काफी अच्छे से याद रखिएगा एंड मोस्टली ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in MS Excel 2010, blank operation is used on data tables for displaying only the rows that meet certain conditions and the other rows gets hidden. A option is chart, B option is sort, C option is table and D option is filter. So the right answer is option D, that is filter operation. Next question is in MS Excel 2010, blank is used in finding text within the sheet. A option is Control plus F, B option is Alt plus R, C option is Control plus T, D option is Alt plus F. तो अभी हमने इसके ऊपर जो है स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन था, सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए. वहां पर भी ऑप्शन में ये मेंशन किया हुआ था, दैट इज कंट्रोल प्लस एफ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग टेक्स्ट विद इन अ एक्सेल शीट. नेक्स्ट इज ब्लैंक शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 2010 टू go to the data tab. A option is Alt plus N, B option is Alt plus F, C option is Alt plus I, and D option is Alt plus A shortcut key. So to go to the data tab in Excel, the shortcut key is Alt plus A. So option D is the right answer. Next question is choose the wrong option with respect to MS Excel 2010. A option is in MS Excel 2010, we can save the file by using the F12. B option is in MS Excel 2010, we can insert a table from Insert tab. C option is in MS Excel 2010, we can insert comment to a cell. And D option is in MS Excel 2010, to open a new blank file, Control plus O is used. So the incorrect option is the option D, that is in MS Excel to open a new blank file, जो shortcut की यूज होती है वो होती है Control plus N. Okay, and Control plus O shortcut key is used to open the already existing file, right? Next is blank tab in MS Excel 2010 ribbon bar contains the most frequently used commands such as copying and pasting, sorting and filtering, formatting, etc. Your A option is Home tab, B option is Review tab, C option is Formula tab, and D option is File tab. So the right answer is option A, that is Home tab. Next question is consider a formula equal to A3 plus B4 is typed in cell A5 is copied and pasted into the cell A9, then what will be the formula in cell A9? तो यहाँ पर देखिए इस तरह का सेम क्वेश्चन हम जो है प्रीवियस किसी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सेशन में कर चुके हैं. तो जिन्होंने वो किया होगा सो वो इजीली इसको जो है राइट आंसर कर पाएंगे. सो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा टाइम ले सकते हो इसको सॉल्व आउट करने के लिए. जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग जो है, जो सेल एड्रेसिंग है वो है रिलेटिव रेफरेंसिंग. ओके, सो रिलेटिव रेफरेंसिंग फॉर्मूला को जब भी कॉपी किया जाएगा सो वो उनकी जो सेल एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेल टू विच यू कॉपी दैट फॉर्मूला. तो यहाँ पर देखिए E9 में इसको पेस्ट किया जा रहा है. तो अकॉर्डिंग टू E9 जो है ये यहाँ पर फॉर्मूला बन के आ जाएगा, सेल की एडजस्टमेंट हो जाएगी. और कैसे होगी? ऑन द सेम प्रीवियस पैटर्न जो यहाँ पर A3 प्लस A5 सेल में जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर देखिए E9 में इसको पेस्ट किया जा रहा है. सो E9 में देखिए तो E मीन्स E कॉलम की बात हो रही है और 9th रो की मीन्स 5th कॉलम एंड 9th रो. तो पहले फॉर्मूला को देखिए, दैट इज A5 इक्वल टू A5 में सेल में दिया हुआ है A3 प्लस B4. तो
पहला जो A3 है मीन्स कॉलम सेम रह रहा है एंड जो रोज हैं वो 2 रो पीछे जाना है, दैट इज 5th रो देन 4th एंड 3rd। इसी तरह अपने E9 में क्या आएगा, इक्वल टू सेम कॉलम रहेगा दैट इज E और 2 रो पीछे जाना है दैट इज 9, 8 एंड 7, इट मीन्स E7 देन प्लस यहाँ पर आगे देखिए B4, आपको A5 से B4 पे जाना है मीन्स एक कॉलम आगे जाना है, तो EF नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो F होगा और एक रो पीछे जाना है लाइक B4 4th रो पे जाना है 5th से, सो 9 9th से आप पीछे जाओगे एक, सो 8th। ओके, सो E7 plus F8, this is the right answer, so option A is the right answer। okay, the next question is, in an MS Excel 2010 sheet, a cell with text overflow problem can be dealt with blank. A option is text bumping, B option is text aligning, C option is text merging, and D option is text wrapping. So the right answer is the option D, that is text wrapping. Now the next question is, in MS Excel 2010 ribbon, blank is used for adding different objects in a worksheet such as image, charts, pivot tables, hyperlinks, special symbols, यहाँ पर spelling mistake है, special symbols, equations, headers and footers. Your A option is data, B option is file, C option is formula, and D is insert. The right answer is option D, that is insert. Next question is, blank shortcut key is used in MS Excel 2010 to select the entire worksheet. If you want to select the entire worksheet, so which shortcut key is used? Your A option is Shift plus R, B option is Control plus R, C option is Control plus A, and the last option is Alt plus A. The right answer is option C, that is Control plus A shortcut key is used to select the entire worksheet, and in the option that is Alt plus A, option D में देखिए Alt plus A हमने इसको previous अभी किया, that is this shortcut key is used to go to the data tab. Okay. Next is blank tab in MS Excel 2010. Ribbon bar contains tools for inserting functions, defining names, and controlling the calculation options. Your A option is page layout, B option is review, C option is formula, and D is file tab. So the right answer is option C, that is formula tab. Next question is, blank shortcut key is used in MS Excel 2010 to select a column. A option is Control plus space bar, B option is Shift plus space bar, C option is Control plus enter, D option is Alt plus enter. The right answer is option A, that is Control plus space bar. And this question is also very important, so काफी अच्छे से याद रखिएगा, that is to select a column, Control plus space bar shortcut key is used. Next is, in MS Excel 2010, blank are used to make a graphical representation of any set of data. A option is rows, B is tables, C option is charts, and D option is columns. So the right answer is the option C, that is charts. Next is, blank function in MS Excel changes all the characters of the text to uppercase. A option is lower, B option is proper, C option is upper, and D option is len, means length function. So the right answer is the option C, that is upper function. Upper function changes all the characters of the text to uppercase, to the capital letter. एंड जो लोअर फंक्शन होता है वो करता है अपर केस को लोअर केस में, मीन्स कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। एंड जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो फर्स्ट लेटर को जो अगर वो स्मॉल है तो उसको कैपिटल करता है और बाकी लेटर्स को जो है स्मॉल में लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ओके, मीन्स स्मॉल लेटर में लेके आ जाता है। सो ये डिफरेंस है, तीनों फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। और LEN दैट इज लेंथ फंक्शन को हमने प्रीवियस से किया, दैट इज टू अगर कैरेक्टर्स को काउंट करना है किसी भी स्ट्रिंग में, सो इसके लिए लेंथ फंक्शन यूज होता है। Now the next question is, choose the wrong option with respect to MS Excel 2010. Your A option is, in MS Excel 2010, we can insert comments to a cell. B option is, in MS Excel 2010, to open an existing file, Control plus O is used. C option is, in MS Excel 2010, we can insert a table from the Insert tab. And D option is, in MS Excel 2010, we can save the file by using the F2 key. So the incorrect one is the option D, that is, in MS Excel, we can save the file by using the F2 key. Because to save the file in MS Excel, the function key used is F12, not F2. F2 is used for the editing purpose in the cell, right?
Next question is, in MS Excel 2010, to select two or more non-adjacent worksheets, click the tab for the first worksheet, then hold down the blank key on your keyboard while you click the tabs of the other sheets you want to select. ओके बहुत सारे आइकन्स या शीट दी हुई हैं, तो आपने नॉन एडजेसेंट लाइक 1 2 3 शीट्स दी हुई हैं, तो आपने 1 को सिलेक्ट करना है, देन 3 को सिलेक्ट करना है, देन 6 को सिलेक्ट करना है। सो अगर इस तरह की आपने नॉन एडजेसेंट वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, सो पूछा जा रहा है कि आपने जो है कौन सी सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी एक वर्कशीट को मीन्स फर्स्ट वर्कशीट को, जैसे आपने फर्स्ट को चूज करना तो आपने फर्स्ट को किया सिलेक्ट कर्सर से, देन आपने कौन सी कीज को होल्ड करना है, देन बाकी आप जो है बाकी शीट को आप या बाकी टैब पर बाकी जो शीट टैब है उन पे क्लिक करते जाओगे तो आपकी जो नॉन एडजेसेंट शीट्स हैं वो सिलेक्ट होती जाएंगी। तो उसके लिए जो आपको की होल्ड करके रखनी होती है वो होती है कंट्रोल की। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next is, which of the following MS Excel 2010 function is used to convert a date that is stored as a text to a serial number that Excel recognizes as a date? A option is date value, B option is today function, C option is network days, and D option is eDate function. So the answer for that is the option A, the right answer, that is date value function. Next is, which of the following is the function in MS Excel 2010? A option is add, B option is range, C is formula, and D is sum. So the right answer is the option D, that is sum function. Next is, which one of the following is a wrong declaration in MS Excel 2010? यहाँ पर टाइम वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है एंड उसका जो है जो फॉर्मेट रहता है वो दिया हुआ है। तो विच वन इज द रॉन्ग डिक्लेरेशन? सो यहाँ पर आप सभी ऑप्शंस को देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज टाइम वैल्यू। और जो यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, जो टाइम वैल्यू फंक्शन है, इट रिटर्न्स द डेसिमल वैल्यू ऑफ द टाइम रिप्रेजेंटेड बाय अ दिस स्ट्रिंग। जो यहाँ पर इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगी उसको जो है कैलकुलेट करता है टाइम वैल्यू फंक्शन, जो इस ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में इंट्रोड्यूस किया है। इसकी जो डेसिमल वैल्यू है इसको रिटर्न करता है टाइम वैल्यू, एंड द सिंटैक्स इज टाइम वैल्यू देन ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइम टेक्स्ट। So that's it guys, I hope that you love the content. So please like the video, and for more videos stay tuned with this channel, and please visit the description box. Here I provided the link of all my playlists. So we will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.